graphs of absolute valued functions. Now, those of you who've done ADMAT must have done graphs of absolute valued functions before. सही मेरा कराने का तरीका थोड़ा सा different होता है. I would want you to learn my method right now, and then I'll come back to your method. मुझे पता है उसमें क्या होता है कि आप ऊपर नीचे ग्राफ को मूव कर रहे होते हैं depending on what is given inside or outside the bracket. And we'll talk about that as well. But what I'm appealing to is the fact that you can make graphs simply rather than making them complicated. Okay. So graphs of absolute valued functions or modulus functions are always V-shaped. So yeah, they are in the shape of a V. And we'll talk about कि वो V कैसे generate होता है. सही है. Modulus का itself मतलब क्या होता है कि it makes negative things positive. सही. So negative things positive. So modulus का generally जो graph होता है वो आपको यूं करके नजर आ रहा होता है, यूं करके नजर आ रहा होता है, something like that. सही है. So it's always positive, and we'll talk about that. पहले हम देख लेते हैं कि इसके questions क्या हैं, इसके हिसाब से हम चलते हैं, and then we'll conclude something. This is, it says sketch the graphs on separate axes. सही है. तो पहले तो मैंने एक axis बना ली. Now, in order to sketch a graph of a straight line, you need 2 points. एक आप y-intercept निकाल लें और एक आप x-intercept निकाल लें. सही. Everybody understands that the y-intercept of this first line is 1. x-intercept के लिए क्या करना पड़ता है? इसको 0 रखना पड़ता है, तो x की वैल्यू भी 1 आ जाएगी. Okay, I hope everybody can do this on their own. When you're sketching a graph, try to make it as accurate as possible. आपके पास एग्जाम के अंदर स्केल होगा तो आप स्केल ही यूज करेंगे, and then we'll try to get through it. मैं अभी approximately लगा रहा हूँ, but you can see that I'm trying to be as accurate as possible. मैंने ये 2 points मार्क किए, एक 1 और एक x1 और y1, और फिर जो है वो मैंने कोशिश की कि इनके बीच में जो है वो एक स्ट्रेट लाइन बन जाए. So that is a graph of y equals to 1 minus x. सही है. Now a lot of you will be able to do the second part by looking at the first part, क्योंकि अभी मैंने पहले part की line बनाई हुई है, तो मुझे बहुत सारे लोगों जिन्होंने पहले किया हुआ है वो कहेंगे कि सर ये जो नेगेटिव पोर्शन नजर आ रहा है आप इसको क्या करें, आप इसको ऊपर रिफ्लेक्ट कर दें तो ये मॉड्यूलस का ग्राफ बन जाएगा. एंड आई एब्सोल्युटली एग्री विद यू. So yeah, the only problem is then I have to go on and find another point and then try to reflect it up. So yeah, and since this line is already drawn for you, this idea is easy. What if you hadn't drawn this line in the first part? तो फिर आप मॉड्यूलस का ग्राफ कैसे बनाते हैं आप ये और से देखिएगा. दिस इज अ न्यू आइडिया, हो सकता है आपने पहले ना देखा. सही है. मैंने आपको क्या सिखाया था कि जब मॉड्यूलस हटता है तो 2 पॉसिबिलिटीज जनरेट होती है ना, वन विद द प्लस and one with a minus. So your graph should essentially be a combination of 2 lines. This and this. These are 2 lines that you need to draw. So yeah. इसका x-intercept क्या होगा? Let me write this. In fact, let me change the colors a little bit so that you're able to see it clearly. 2 lines अब मैंने कर ली. सही है. रेड वाली का मैं -1 plus x. रेड वाली का y-intercept है 1, x-intercept भी है 1. ये पहले भी बनाई थी मैंने लाइन. इसका y-intercept है -1. x-intercept निकाल लेते हैं. x-intercept कैसे निकालते हैं? by keeping y as 0. तो x-intercept 1 आ रहा है. Okay. So what I'll then do is I'll try to sketch it on a graph. Let me just make it broader.
ओके पहले मैं रेड वाली लाइन बना रहा हूँ. रेड वाली लाइन क्या है? y intercept 1, x intercept is also 1, so I connect these 2 points and I draw a line between them. So ये line बन गई मेरी. You can stress this a bit if you want. Then with the blue one, y intercept is -1 and x intercept is the same, so I get this line out of that. अब मैंने आपसे क्या कहा कि modulus graphs are always V-shaped. So do we all see this V that I've made? Okay, ये मैंने V बना दिया था. तो अब मैं क्या करूंगा, मैं इस V के अलावा जितनी भी मेरे पास लाइंस हैं उनको मैं इरेज कर देता हूँ. And this is the graph of my modulus function. सही है? So even if I did not have that line that I saw earlier, मैं जो है उसको 2 लाइंस में ब्रेक करके हमेशा जो है वो ड्रॉ कर सकता हूँ. Okay, and this is useful. Let's say मैं आपसे कहता ये third part है, for example, that I want you to draw directly. और क्या है इस third part में? ये कहता है कि y equals to 2 plus modulus of 1 minus x. Now, those of you who've done this before, तो ये एड मैथ में आपने कैसे सीखा था कि आप 1 माइनस एक्स बनाएं, उसको रिफ्लेक्ट कर दें और फिर जो भी ग्राफ होगा उसको 2 यूनिट जो है वो आप ऊपर मूव कर दें. अच्छा, सम ऑफ यू माइट हैव लर्नड इट बिफोर. मैंने आपको अभी क्या सिखाया कि जब आप मॉडुलस को रिमूव करते हैं तो आपके पास 2 पॉसिबिलिटीज जनरेट होती हैं, वन विद अ प्लस एंड वन विद अ माइनस. तो बेसिकली मैंने ये 2 लाइंस बनानी है, 3 माइनस एक्स की और एक जो है वो 1 plus x. Okay, so what I do is तो पहले मैं x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट लिख लूँ. y इंटरसेप्ट इसका है 3 और x इंटरसेप्ट भी 3 है. y इंटरसेप्ट है 1, x इंटरसेप्ट है -1. Okay. Three and 3 और 1 and -1. सही है. अब अगेन व्हाट आई लुक फॉर इज v. तो ये मैं v रहने देता हूँ और इसके अलावा जो भी है वो सारा मैं इरेज कर देता हूँ. सही है. So I get my modulus graph directly. फिर मुझे उसमें मूवमेंट्स नहीं करनी पड़ती. Everybody is clear on these ideas? Any questions so far? सही है. If you want to continue with your own idea that you learned in AdMath, वो 2 यूनिट ऊपर मूव करने वाला, I'm absolutely fine with that as long as you do it correctly. वो क्योंकि मैंने नहीं सिखाया तो I don't know उसमें आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है. Okay, so you're free to use any other ideas, but you have to do them correctly. सही है. अब यहाँ पे भी if you look at this question, तो ये था sketch the graph of this showing the points where the graph meets the axis. तो आपने सिंपली क्या करना होगा, आपने 2 लाइंस बनानी होंगी, एक हाफ एक्स -1 की और एक -हाफ एक्स +1 की. Okay, and then you sort of draw this graph and you can continue on. इसमें कुछ मुश्किल नहीं है. I'm not really going on and doing the same thing again. Okay.
Any questions? बहुत ज्यादा अच्छा पढ़ा रहा हूँ मैं, शायद कोई मसला ही नहीं है। बेटा पूछ लें अभी जो पूछना है। If there is confusion on the graphs, I can do it again. Okay, let's look at सर this one. जो ग्राफ ड्रॉ करनी होगी वो ऐसा होगा कि पहले हम लोग दोनों लाइंस को स्केच कर दें और फिर रेस कर दें, तो ये मतलब थोड़ा बहुत ट्रायल एंड एरर तो होगा ना इसमें, कि हम लोग को एग्जैक्ट वी शेप लोकेट करके ड्रॉ करना होगा पेपर में। बेटा हमेशा जब आप लाइंस बनाओगे तो आपका दो स्ट्रेट लाइंस बनाओगे तो एक्स ही बनेगा ना। बिल्कुल। ओके, तो आप इसमें से बस ये नीचे से ये इरेज कर दोगे तो वी बन जाएगा ये। ठीक है। ओके, ओके, now it's just get the upper part of x. ये देख लेते हैं। Let's look at one more question. अब इसमें दो लाइंस क्या बननी चाहिए? एक बननी चाहिए 2x minus 4 और एक और क्या बननी चाहिए? minus 2x minus 4. Everybody agrees with that? मैंने मॉडुलस ऑफ x हटाया तो प्लस और माइनस x जनरेट हुआ है। ओके, now let's try to draw these two lines. इसका y इंटरसेप्ट क्या है? -4. x इंटरसेप्ट क्या है? 2. सर सेकंड इक्वेशन में -2x + 4 नहीं होगा? नहीं, देखो यहाँ से हटा है ना प्लस माइनस। अच्छा, -4 की साइन तो सेम रहेगी। ओके, y इंटरसेप्ट क्या है? -4. x इंटरसेप्ट क्या है? -2. ओके, सॉरी। One, two, three, four. 1, 2. यार सर देख लो आप लोग नहीं रखा हुआ हो। एक लाइन बन गई और ये दूसरी लाइन बन गई। Okay, where's the v? Where's the v? So what I'll do is I'll erase this part. हाँ उस्मान, बिल्कुल बिलो एक्स एक्सिस इंटरसेक्ट हो सकता है बिकॉज दिस इज द फाइनल ग्राफ ना। मॉड्यूलस ऑफ एक्स का ग्राफ अगर आप सिर्फ बनाते तो फिर वो नीचे ना जाता, लेकिन क्योंकि उस पर आगे मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन और सब प्रीवियस है वो जो है वो नीचे भी चला जाएगा। आपने बस दो लाइंस बनानी है और उसको इंटरसेक्ट कराना है। दिस इज द ग्राफ विल इवेंचुअली गो टुवर्ड्स पॉजिटिव्स। सही है? अगर आप सिर्फ इसका ग्राफ बनाते ना तो ये बिलो एक्स एक्सिस ना जाता। क्यों? क्योंकि ये पूरा मॉड्यूलस है। Okay, any questions? Okay, one more thing about modulus graphs. The modulus graph will be an inverted V. सही है, ये नोटिस कर लें प्लीज।
if there is a negative sign outside the modulus. सही है? For example, the graph of will be an inverted V. एक्सेप्शन मैंने क्या क्रिएट किया है कि अगर मॉड्यूलस के बाहर इटसेल्फ एक नेगेटिव लगा हुआ है तो वो जो है वो एक इन्वर्टेड भी आएगा। क्यों होता है ऐसे, ये देख लेते हैं। अब जाहिर सी बात है, मॉड्यूलस के बाहर अगर आपने एक नेगेटिव लगा दिया तो मॉड्यूलस का मकसद खत्म हो गया ना, कि मॉड्यूलस नेगेटिव को पॉजिटिव बनाता था। अब वो कह रहे हैं कि जो भी मॉड्यूलस के अंदर से वैल्यू निकलेगी वो बाहर पहले माइनस से मल्टीप्लाई होगी, तो सारी वैल्यूज होंगी वो अल्टीमेटली नेगेटिव बन जाएंगी। इसको भी दो में ब्रेक करते हैं, एक ये बनेगा और एक ये बनेगा। इट्स जस्ट दैट कि अब मैं जब इसको फाइनल इरेज कर रहा हूँ तो मैं जो है वो इन्वर्टेड वी देखूंगा, मैं सीधा वी नहीं देखूंगा। ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। सॉरी ये 2 + x है। इसका x इंटरसेप्ट -2, y इंटरसेप्ट 2, और x इंटरसेप्ट Sana, please mark your attendance at the end now. Okay, now what I will look at is an inverted V. Zaib, no, there are no, there won't be modulus in Y, there will just be modulus in X. Okay, so this is a graph of 3 minus modulus of 1 minus X. It's an inverted V because modulus की वैल्यू जो है वो नेगेटिव लगा है। उस्मान इसमें एम्पलीट्यूड नहीं होता, एम्पलीट्यूड साइन और कॉस में होता है because those graphs repeat themselves. There's not a wave. Okay. Yeah, it's the vertex. इसको vertex कहोगे तुम. The vertex of this graph is 3 units above the x-axis. Okay. सर इसके ऊपर वाला क्वेश्चन दिखा देंगे? थैंक यू सर। Okay, कोई सवाल यहाँ तक? अच्छा,